Before I start explaining you what mutarotation is, let's go over a few important concepts first. Now, we're going to take the example of D-glucose. Now, you know that D-glucose in its cyclic form has two anomers. D-glucose in its cyclic form has two anomers, the alpha anomer and the beta anomer. The alpha anomer and the beta anomer. Now, these alpha and beta anomers of D-glucose differ from one another in their ability to rotate plane polarized light. The alpha and the beta anomers of D-glucose differ from one another in their ability to rotate plane polarized light. Now, what is plane polarized light? Your regular plane polarized light is unidirectional light. Your regular light, see, it's scattered in all directions. अब आप इस स्कैटर्ड लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास कराइएगा तो ये स्कैटर्ड लाइट जो है वो यूनिडायरेक्शनल बन जाएगी, एक ही दिशा में जाने वाली लाइट बन जाएगी. अगर आप इस स्कैटर्ड लाइट को जो सब जगह सारी दिशाओं में स्कैटर्ड है, आप उसको प्रिज्म के थ्रू पास कराइएगा तो वो यूनिडायरेक्शनल बन जाएगी. इस यूनिडायरेक्शनल लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं. तो ये अल्फा और बेटा, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बेटा डी ग्लूकोज होते हैं, जो डी ग्लूकोज के एनमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह डिफर करते हैं कि इनमें प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने की क्षमता अलग अलग होती है. अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को 112 डिग्री घुमाता है. 112 डिग्री घुमाता है ये अल्फा डी ग्लूकोज. और बेटा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को 18.7 डिग्री घुमाता है. So I'll repeat that the alpha and the beta anomers of D-glucose differ from one another in their ability to rotate plane polarized light. ये जो आपका ये वैल्यू है ना, ये जो 112 डिग्री आपकी वैल्यू है अल्फा डी ग्लूकोज, इसको स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज का. बेसिकली स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी प्योर शुगर, it is the angle at which that pure sugar rotates plane polarized light. So in the case of alpha D glucose is rotating plane polarized light to 112 degrees in a positive clockwise direction. Specific rotation of alpha D glucose will be 112 degrees. Likewise, for beta D glucose, its specific rotation is 18.7 degree. This means that beta D glucose can rotate plane polarized light to 18.7 degrees in a positive clockwise direction. Right. So I'll sum it all up again. That glucose in its cyclic form has two anomers, alpha and beta, and these alpha and beta anomers of D-glucose differ from one another in their ability to rotate plane polarized light. Specific rotation is the angle at which a pure sugar rotates plane polarized light. In the case of alpha D-glucose, the specific rotation is 112 degrees, and in the case of beta D glucose, the specific rotation is 18.7 degrees. Again, I'm going to say it again, okay? The specific rotation of alpha D glucose is 112 degrees, and the specific rotation of beta D glucose is 18.7 degrees. I hope there is no confusion in this. When I say that the specific rotation of a particular sugar is a certain value, what I mean to say is that particular sugar is rotating plane polarized light to that particular angle. I'll give you the example of alpha D glucose again. When I say that the specific rotation of alpha D glucose is 112 degrees, what I mean to say is that alpha D glucose rotates plane polarized light
to 120 degrees. Likewise, for beta D glucose, when I say that the specific rotation of beta D glucose is 18.7 degrees, what I mean to say is that beta D glucose can rotate plain polarized light to 18.7 degrees. So let me ask you a question. अगर हम प्योर अल्फा डी ग्लूकोज एक सोल्यूशन में, एक एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं और उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट शाइन थ्रू कराते हैं. ठीक है, आपने एक प्योर अल्फा डी ग्लूकोज लिया और उसको एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया और आप उस सोल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा रहे हैं. हाउ विल इट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट? लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. और दूसरा सवाल भी आपसे पूछ रही हूं. लेट्स टेक प्योर बेटा डी ग्लूकोज in an aqueous solution and pass plain polarized light through it. How will, तो ये solution उस plain polarized light को कैसे घुमाएगा? Sorry, just like 2 seconds ago I said that the specific rotation of alpha D glucose is 120 degrees. I'm sorry, that was 112. My mistake, my bad. Okay, so my questions were कि कैसे ये plain polarized light को ये दोनों solution घुमाएंगे. Now, in the case of alpha D glucose, we know that alpha D glucose जो plain polarized light को है वो 112 डिग्री पर घुमाती है. तो हम कहेंगे कि भाई अल्फा डी ग्लूकोज को जो आपने एक्वस सोल्यूशन में डाला था वो 112 डिग्री घुमाएगा. और सिमिलरली बेटा डी ग्लूकोज हम जानते हैं कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 है. तो अगर आप बेटा डी ग्लूकोज को सोल्यूशन में डाल रहे हो और उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू करा रहे हो तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18.7 डिग्री में घुमाएगा, है ना? यही तो आप कहोगे और ये कोई भी यही कहेगा. आई मीन दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, बट that is not what is actually observed scientifically or experimentally. I mean, sorry, not scientifically. So what one would expect is not what is being observed. So what was experimentally observed was that the alpha D glucose के solution की ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी जब उस सोल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन आप मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, you see that the value of its specific rotation, it keeps changing until eventually it reaches a certain value. And in the case of alpha D glucose, it's 52.7. It's 52.7 in the case of alpha D glucose. But for different sugars, this value is going to be different. For alpha D glucose, this value turns out to be 52.7. Later on, we'll see, we can even calculate this value. We'll see later on as we move. So the same is true for beta D glucose solution. इस solution के specific rotation की value भी ऐसा experimentally देखा गया है कि it keeps changing and it keeps changing until it reaches a certain specific value. और beta D glucose के केस में भी वो value 52.7 degrees ही है. So this phenomena of change in the specific rotation, of a pure sugar is called mutarotation. See, muta means change. So mutarotation literally means change in rotation. So change in what rotation? It's a change in the specific rotation of the pure sugar. Okay? So mutarotation is the process by which the specific rotation of a pure sugar changes and changes until it reaches a certain value. Now, why is this happening? Why is the specific rotation of a pure sugar changing? Alpha D glucose या फिर beta D glucose for that matter, इनका specific rotation change कैसे हो सकता है?
We know that specific rotation of a pure compound is a constant for that given compound. So ऐसे कैसे हो रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज का specific rotation change हो रहा है? Let's find out. Now, when you put a cyclic carbohydrate in an aqueous solution, and in our case, we're going to put alpha D glucose because that's the example we've picked. So, when you put a cyclic carbohydrate in an aqueous solution, it will open up. It will open up into its straight chain form. ये देख रहे हैं straight chain form. Then the straight chain form will close back down. ये देखा? It closes back down. And when it closes back down, with the OH either pointing up or with the OH either pointing down. Either of the two rings you can get. Now, when it is closing down, as you can see, either an alpha anomer form will form or a beta anomer will form. अगर OH ऊपर होता है तो beta anomer form हो जाएगा. अगर OH नीचे होता है तो alpha anomer form हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. अगर OH रिंग के ऊपर होगा तो beta anomer form होगा. अगर OH रिंग के नीचे होगा तो अल्फा एनोमर फॉर्म होगा. इसको रिमेंबर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. आपका जो बेटा होता है, सन, बेटा मतलब योर ऑफस्प्रिंग, जो सन आपका जो बेटा है, उसको आप हमेशा ऊपर का दर्जा देते हैं. तो रिंग के अगर OH ऊपर होगा तो उसको बेटा फॉर्म कहेंगे और रिंग के जो नीचे होगा उसको बाय डिफॉल्ट फिर वो अल्फा हो जाएगा. एनीवे, I'll just repeat everything all over again. When you put a cyclic carbohydrate in an aqueous solution, it is going to open up into its straight chain form. Then the straight chain form will close back down on itself. And when the ring closes back down, either you get an alpha anomer or a beta anomer, depending on where the OH group is flipped. Okay, what will happen now is that the ring will then open back up again and then close back down on itself. फिर से ये खुल जाएगी और फिर बंद हो जाएगी. और जब ये बंद होने लगेगी तो उस समय again it will either form an alpha anomer or a beta anomer. अभी हम देख चुके थे कि कैसे इसने alpha या beta anomer form किया था. तो this closing in and opening up of the ring will happen over and over and over. Think of Pac-Man, वो जो गेम होता है आपके कंप्यूटर पे, Pac-Man. You see, it's that circular thing that keeps blobbing through the game with its mouth opening and closing, opening and closing, opening and closing. The same thing is happening to these sugar rings. These sugar rings also have, they have like a Pac-Man mouths. They keep opening and closing, opening and closing. So what happens is when the mouth will open, that is when the ring will open, it will give the anomeric carbon. See, this is the, oh God, how do I get the pen working? Okay, yeah. So where was I? Yeah, so when the mouth will open, that is when the ring will open, it will give this anomeric carbon enough time to take this OH group, this is the OH group, and flip it. And then it will close back down again. फिर दोबारा ये रिंग खुल जाएगी और जब ये खुलेगी तो it will flip its OH group around and then again close back down and lock this OH in a new position this time maybe. And then again the ring will open back up and flip its OH group and then close back down again. And maybe the OH is in a different position this time. So when that carbon is rotating that OH group around, sometimes the OH group will be above the ring and sometimes the OH group will be below the ring. And depending on the position of the OH group, you either get an alpha anomer or a beta anomer. So, because of this constant opening and closing of the sugar ring, leading to the OH group getting flipped around,
we are getting alpha and beta anomers that are constantly changing back and forth, back and forth, back and forth. Uh, I'll just say all of this all over again. I mean, let's just sum up now, Yeah. So this ring will constantly open and close, back and forth, back and forth, back and forth. The OH groups twist and turn, twist and turn, twist and turn every time the ring is doing this. And eventually, what we'll get to is equilibrium, meaning the rate at which the ring is closing to give us an alpha form is the rate at which it is closing to give us a beta form, and vice versa. And that equilibrium is not going to change anymore. Everything has come to par with each other, and like they've come to terms with itself. So you see how at the equilibrium state, the solution has a mixture of alpha and beta anomers, and not just alpha anomers, the thing that we started with in the beginning. Remember, we took alpha D glucose solution, and then we took alpha D glucose solution, and then we waited a while. So when the solution reached an equilibrium, it didn't just have alpha anomers in it. The solution had a mixture of both alpha and beta anomers at that time. राइट तो अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं दोबारा कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को एक्वस सोल्यूशन में रखेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे रोटेट करेगा विल लेट दिस सॉल्यूशन सिट फॉर अ व्हाइल और फिर अगर जब हम no. Can I just can I just rephrase the question again? I'm really sorry. Okay. When I ask you this question again कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को एक्वस सोल्यूशन में रखेंगे तो वो पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड को कैसे रोटेट करेगा ऑल यू गोटा नो इज कि उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में उस सोल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और बेटा डी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. So let's say at a particular point in time, alpha D glucose का solution, alpha D glucose का concentration 10% है और beta D glucose का concentration 90% है. ठीक है? तो specific rotation of the solution क्या होगा उस at that point in time. तो specific rotation उस solution का क्या होगा at that point in time will be, see, 10% of the solution will try to rotate plane polarized light to 112 degrees and 90% will try to rotate the plane polarized light to 18.7%. All we gotta do now is take out the arithmetic average and you have the answer. अब जब आपने इसका निकाल लिया है तो इक्विलिब्रियम पर भी आप अल्फा डी ग्लूकोज के सोल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं इफ़ यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बेटा डी ग्लूकोज इन दैट सोल्यूशन एट द इक्विलिब्रियम स्टेट. और इक्विलिब्रियम स्टेट पर अल्फा डी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में अल्फा डी ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 36% देखा गया है और बेटा डी ग्लूकोज का 64% देखा गया है. तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा. देखो 36% will try to rotate plane polarized light to 112 degree. 64 will try to rotate plane polarized light to a 18.7 degree. Find out the arithmetic mean and you get the answer as 52.7, the thing that we arrived at in the beginning of the lecture. So now you're in a position to answer ki why the specific rotation of a pure sugar changed. It is because जो solution है वो अब pure तो रहा ही नहीं है, उसमें अब
सिर्फ प्योर शुगर नहीं है, बल्कि उसमें उस प्योर शुगर का दूसरा एनोमर भी मौजूद है. सो फॉर एग्जांपल, जब आप अल्फा डी ग्लूकोज ले रहे हैं और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी देर बाद मेजर कर रहे हैं, तो उस सोल्यूशन में सिर्फ अल्फा एनोमर्स मौजूद नहीं होंगे. उस सोल्यूशन में सिर्फ अल्फा एनोमर्स मौजूद नहीं होंगे, बल्कि उस सोल्यूशन में आप बीटा एनोमर्स भी मौजूद होंगे, because of the constant interconversion of alpha into beta and beta into alpha. Are you getting my point? तो जो स्पेसिफिक रोटेशन हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम मेजर कर रहे हैं उस सोल्यूशन की, वो अल्फा और बीटा दोनों के स्पेसिफिक रोटेशन का काट पीट के जो एवरेज आया है वो है. तो सोल्यूशन तो प्योर रहा ही नहीं.